गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेल, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है हम दोनों के लिए, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि हम एक न्यू गैजेट को ऐड कर रहे हैं आज अपनी इस जर्नी में, और वो गैजेट आने वाली है और आते ही हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए आप लोगों को उसके बारे में दिखाएंगे। आई एम श्योर यू गाइस गोना लव दैट टू। स्टे ट्यून्ड। जो गैजेट है वो आ गई है और हमारे जो दोस्त वो हमारे साथ रेडी हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको ओपन करना। कम ऑन कुश, यस यस, कम ऑन, कर दो। कोई बात नहीं, आराम आराम से करो, खुल जाएगा। यस, चलो। आई कांट वेट, जल्दी करो यार भाई, आराम से दोस्त। So guys, we are excited. इसमें 2 पैकेट जैसे भी है खोल दो भाई, सील पैक आया होगा ना अच्छे से। पापा खोल दोगे? Okay, I'll just help you further. So you have to hold this for me. Okay. Yes, surprise! This is the most. Oh my god! So this is DJI OM4 SE series. It's a gimbal, and this gimbal I am adding into our journey. I'll be showing what all we get inside soon. Stay tuned, guys. So here we go. Okay, इसकी सील लगी हुई है बैक साइड में। Okay, so we are going to show what all we get inside this. Okay, what all it says, we have a mobile holder. Okay, this is supporting Android as well as iOS. We get this creating management kit. Let's see कि kit में क्या क्या आता है. So kit में we have a manual इसका पूरा, and we have got a pouch जिसमें हम इसको कैरी कर सकते हैं. ओके, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आई थिंक हैंड में डालते हैं और इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, राइट? फर्दर इफ आई शो यू, वाव, गुड इवनिंग। वेल फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू गैजेट विच आई हैव एडेड. टाइम टू डिस्क्लोज दैट व्हाट ऑल वी गेट इनसाइड इट. लेट्स स्टार्ट. Alright friends, so we are starting with the quick view of each item. First you can see the power cable. Second we have wrist strap. Third we can see grip tripod. Then we have got a magnetic phone clamp. And this is DJI OM4 SE stripe. A pouch to carry all this. Now let's talk about the functions, how it works, and few features. So time to show you the function of this stick. Look at this first button, which is M for mode. It is also a button for the power on or power off. So when we keep it pressed, you'll see those lights. The lights are indicating the charger or charging level of the stick. So once we have switched it on, you have to pull this up. Once it is pulled, you pick it up and you attach your phone with it. We have to see
once it is attached, then you just have to press this M button once. It will take its shape. Alright, so once it has taken its shape, we go further. We go to DJI Mimo app. So this app, once you have opened, it gets connected with it. Now you can see this is how it will display. Okay, let's talk about the next function. So the next function is this. Now this is called a joystick. A joystick, as we all know, if you move towards left, it will go left. If you move towards right, it will go right. If you turn towards up, down. So this is the jaw movement. Okay, so जब भी आपको लग रहा है कि हमारी movement जो है कैमरे की वो सही नहीं है, so just see this one function which is on your right finger. You just have to press it twice and it will take that position. I'll show it to you once again, like I have done towards right. Now if I press this, it will come back to original. This. Okay guys, so next function, if you can see this red button, उसके ऊपर ही कैमरा भी बना हुआ है. So अगर हम इसको प्रेस करते हैं, so you will see the video will start. Okay, right now it is on photo mode. So to change this photo to video, we have to just click once on mode and it will go to video mode. वीडियो मोड करते ही अब हमारे को जो है फर्स्ट बटन, अगर हमें इसका वीडियो स्टार्ट करना है तो हम ये रेड वाला बटन दबाएंगे और ये देखिए आप वीडियो हो गई है स्टार्ट. अगर इसको यहीं पे स्टॉप करना है, सो इमीडिएटली यू जस्ट प्रेस दिस वंस अगेन एंड इट इज स्टॉप्ड. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस. वन मोर फंक्शन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. You can see this on the left side. This button is for zoom in and zoom out. Now I'll do it towards up and you see how it zoom in. Now if I go towards down, it is zoom out. So this is this function. Okay, so next there is another function. If I press mode button twice, you can see this button. So if I press this twice, this will take shape like this. And if I press it twice again, it will come back to the same position like before. Guys, one more very beautiful function of this gimbal, which I am impressed with. If I draw myself on this, now it has captured my face. अब मैं जहाँ जहाँ मूव करूँगा, ये देखो, ये वही मेरे साथ आएगा. ये देखो, so जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वही ये अब आएगा. ये देखिए. So this is the best thing which I think gimbal should have it, ताकि इसको हम आराम से अब बैठ के ट्राइपॉड की हेल्प के साथ अपनी वीडियोस, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी थॉट्स आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर सकेंगे. थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल टाइम.